And I'll, I'll try telling you there are three options: paste in text, generate, import from file or URL. So you would have used this generate wala most of the times. We can also use the paste in text. And in Gamma, there is one thing that you should understand, that if you have to separate the slides, you want to make slides out of it, and you want to separate the slides, you can use a separator that is two hyphens. Okay, so I'll open GPT, I'll make a small PPT, and I'll tell you what all Gamma can do for you. We all know how it works, but I'll share some more tweaks and tricks. I would love to hear from you people that whether it helped you or not in the comments. Okay, so I'll go to ChatGPT again. We all go to it a lot of time these days. So here it is. I'll make I want to make a 5-slide presentation on 3 updates provided by the new income tax bill 2025. Give me the data of 5 slides separated by okay, so this is a simple prompt that I've used. It has not done that what I wanted it to do, but it's okay. I'll copy it, I'll go to Gamma, I'll paste a text, I'll paste it here, I'll do this thing, I'll do this thing myself. I'll remove this part. Okay, I'll do a presentation. I'll do the formatting as traditional. I'll do continue. Am I audible? Clearly audible, and my screen is visible, right? Audible. Screen is visible, sir. Yes, sir. Yes. Oh, thank you. Now you can see it has created 8 cards. Okay. I don't know why it has created 8 cards. I only want 1, 2, 3, 4, 5. I want 5 cards to be created. Wait a minute. Minus 3, 4, 5, 5 only. I see it card by card. It's not really pulling. Now, split your content into cards. You can also type 3 dashes. I have put 2 dashes, but I'll ask split. Let's see whether it splits it or not. Yes, done. Beautiful, done. 5 slides out there. So this was one trick you can use to separate data. Then you can choose the tone here: informative, objective, concise, English. You can also change the language, by the way, if you see. We'll do it inside, like after we generate it. It is generate, it is brief, what data we have given. Okay. Next. So we'll choose the design we want. I'll take this one. Press generate. And here it goes, generating the slides. One week I've told you that you can use 3 dashes to separate the contents. Okay, it's done. Now let's suppose simplified compliances. I want to add something more. What I'll do, I'll press 3 times plus, and you see it generates more text for me. Similarly, if I want to add something more,
Okay. So it's telling us in the lighter form. We never use it. So we always, that's what I wanted to tell, that there is a tool we already have been using, but we do not explore it further. That should be our responsibility, that if we have started using one tool for automating some part of our work, we should every day, when you use it, try to learn it properly. Like it used to happen with earlier with softwares. For example, we all use Word software, right? We don't know it has some brilliant features these days. So that is how it is. The same thing with AI tools. Plus, like I'll plus plus plus, and again it expands it. Okay. So that is how it is working. And there are a lot of other things that you can do from here: card templates, you can smart layouts, basic blocks, images, all these things you can do. Also, like if I go here, I can add comments, though we can add notes. Card styling, if you go, you can change the styling. If you go here, then you see for every task you do, you'll have to shed some coins that you get when you log in. You can improve your writing, you can fix grammar and spelling, translate. Let's suppose we'll translate it. Okay. We'll translate it. Uh, is it coming? More engaging, expand text, condense text, visualize, split into columns. I'll do it from here only. I'll do it in Hindi. There are so many languages. See, Marathi is there, Hindi. I think this is Bangla. Somebody help me, please. This is Hindi. Okay, I'll translate. Let's see what it does. देखिए. So how beautiful. We have made a Hindi presentation now. You can make the entire thing in Hindi if you select Hindi at the first juncture where we have pushed in data. Okay. So this was one tweak that I wanted to share. So you can use it, you can explore more things, and you can get back to me and tell me also that Ashish, we have also learned this thing. You also start using it. Add an image, replace image, convert to timeline. There are so many things we can, go and check one by one. I'm leaving it all to you people to check it one by one. Now, the thing that we have to do is based on Google Google Sheets. Automation using Google Sheets. We have done a lot of automation using Python. We have made more advanced programs, but Google Sheets is something that we all are familiar, but we don't know how powerful it is, how powerful it can be. Before I move to the kind of automation you can do using it and the automation of email thing that we are here to discuss, I'll show you something that I have created for my students. So this is a certificate that I give to my students for doing a workshop with me. And I would like the participants to scan this QR code. You can scan this QR code. And what I'll do, I will have you scanned it? Have you scanned the part, this part? Give me some thumbs up kind of thing so that I can understand what is going on. Somebody say yes. Somebody please scan it. Anyone? And I'm giving you the certificate number of the student in the chat box. And you push this certificate number in the screen that is coming. I'll do that. Has anyone done? Now, this kind of automation you can do using this.
Google Sheets only. Yes. Did you check what does it show? I'll show you. Yes, invalid certificate number because it is not verified. You have entered the wrong number, maybe. I'll show you how it works. So this is the certificate and I will paste this now. You don't have to paste number. You have to paste only this and you have to press verify. Now see, now this kind of automation I have done using GitHub pages, okay, and using HTML code to create my GitHub page and using AppScript to create a code that runs on my Google Sheet that has collected some data of the student and it will verify. And if you add some other number to it, for example, if I remove one and I enter two and I verify, let's see what it says. It will say invalid certificate number. Okay. So this is a small piece of automation that I have done and it is all running free of cost seamlessly. No issues, no problem. Only I have to manage some small sheets. That's it. If I write yes, the certificate will be sent and I am saving all these certificates in my Google Drive. You can see them. I'll show you. So now how we do that, that is the most important thing that we have to learn, that how actually we do that. So the first thing that I want to tell all of you is that you have to be very, very clear with the steps in your head that what exactly you want to do. Okay, now I'll show you the drive first and then we'll move ahead where it is collecting my certificates. So these are the certificates being generated. Okay. These are the certificates. See. So it is saving all the certificates for me. No issues regarding that. And my database is being maintained. And it is all automated process. Now, I'll tell you that how you have to approach to anything or everything for that matter for using automation. And simply, I don't have knowledge of Excel. No worries. I don't have knowledge of, app script. Don't worry. I don't have knowledge of automation. Don't worry. But only knowledge that I have is chat GPT or prompt engineering, I would say. So I'll take you back to my chat GPT. This is my chat GPT and here I'll show you that what went wrong when earlier I was doing the verification thing. I'll tell you. So we have to first understand that what is our problem. Our problem is we want to, if you cannot see the screen, I'll do it. We want email automation for
GST and income tax updates. So this is the problem that we are targeting. Okay. Yes. Now, what we want, that whenever there is a deadline of what, GST compliance for anything, or income tax compliance for anything, if a user who comes to fill my form, he should get an update about those compliance dates. He will choose one option, either GST updates or IT updates. Getting it? Now you have to visualize actually what is going to happen. So the problems that came to my understanding when I was dealing with this problem was that कि यार जीएसटी की अगर कोई डेट है, मान लो कोई रिटर्न फाइलिंग की डेट है, and I want to make this system go on forever. I don't have to update it year after year. It means what I have a date thing, and I have the month. Date means the number of the day, date, and month is the number of the month. But the year, it has to pick from the system. Now these are small petty things that you have to understand, that you have to have the understand, visualize that how actually the data will flow. So if I take the year using the system, now my code will become endless. It will work forever, forever, forever. Even if these dates change, I can do one thing. I can update my deadline sheet. That is the dates that are there. Also, once a mail is mail is sent to any of the users who has filed this form, I should get a response that okay, mail is sent. That is, a log of response should be maintained. So these are my simple problems that I have to understand. So how to go step by step? So the first step that I went wrong, I'll show you that how I went wrong from right, and then again I made it into a corrected version. I'll show you. This is my first attempt to make this. Okay. This is my first attempt to make this, and I failed in this attempt. Okay. So I failed in it, and I'll show you the failed wala mechanism also. Please remove the black strip from your shared screen. I am not having a black strip on my shared screen. Wait, I'll have to check what you are telling me. Wait, sir. Wait. Stop share. Screen one. Okay. Is it okay now? Is it fine now? No? Still coming. I'll do one thing. I'll put off the duplicate screen. I'll do PC only. Is it gone now? Because I'll have to go back and forth to Zoom again to see what you all are saying. What is this black strip all about? Is it this, kya? Wait. I'll do one thing. I'll share again. Now is it okay? Now is it okay?
I cannot help it. I think what is that? I don't know. Okay, this is there क्या? Wait, I'll do. अभी सही हुआ? अभी हुआ सही? I used to share. What is this? Wait. Is it fine now? I don't know. It's because of low network or what. But my network is good. It's showing full power. Okay. We'll continue. We'll continue with what we did. Okay. Now it will go. Yes. Is it still coming? Yeah. I don't think it should come. No, it's okay. Okay. ठीक है. Fine ना. Let's start. Here is the GPT. So this was the thing I did for the first time when I did. Automated deadline reminder system. Okay. This was the thing that I did, and it failed miserably. It was not sending emails. Okay. I'll show you the sheet, what it was collecting and how it used to look. Think, हाँ. इसमें मैंने क्या किया था गलती, मैं आपको बताता हूं. जो गलती मैंने किया था वो यहाँ पे फॉर्म रिस्पॉन्सेज ये कलेक्ट करता है. जैसे मान लीजिए टाइम स्टैम्प आ गया, राजू आ गया, और यहाँ पे ईमेल आ गया, और उसने अपडेट टाइप जीएसटी किया. यहाँ पे मैंने दो शीट और बनाई है जिसके अंदर अब मैंने डेट लिखा है और डिस्क्रिप्शन लिखा है. अप्रैल 15 को ये वाला हमारा डेडलाइन है, अप्रैल 30 को ये वाला हमारा डेडलाइन है, अप्रैल मई 7 को ये है. और ये सब हमने किसकी हेल्प से बनाया है? यूजिंग सीएजीपीटी. ठीक है, इनकम टैक्स वाला जो हमारा सीएजीपीटी है उससे बन जाएगा. ये आपका जीएसटी वाला जो जीपीटी है उससे बन जाएगा. अब यहाँ पे क्योंकि उस समय मैं पहली बार इसे ट्राई कर रहा था, आई वॉज नॉट अवेयर कि भाई ये जो डेट है ये आधी अधूरी सी दिखने वाली डेट ऐसे काम नहीं करेगी स्क्रिप्ट में. हमारी कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में नहीं आती. राइट, ये आप सबको अब तक समझ में आ जाना चाहिए इफ यू हैव बीन वर्किंग विद कंप्यूटर्स एंड वर्किंग विद एआई स्पेसिफिकली. हमारे कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में नहीं आती. ये हमें समझ में आ रहा है 10th ऑफ एवरी मंथ है, तो उसके लिए एवरी मंथ मतलब 10th ऑफ जनवरी होना चाहिए, 10th ऑफ फेब्रवरी होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ होना चाहिए. राइट. फिर यहाँ पे मैंने एक डेडलाइन मास्टर बनाया, और यहाँ पे देखा कि भाई जीएसटी की अपडेट चली गई, डेडलाइन ये है, रिमाइंडर टाइम मैंने यहाँ पे डाला. इस तरीके का कुछ मैंने सिस्टम सोचा. मैंने क्या सोचा मैं आपको पहले वो बताता हूं. मैंने सोचा कि कोई बंदा और उसी के हिसाब से मैंने प्रॉम्प्टिंग किया कि कोई बंदा जो है वो रिस्पॉन्स देगा मुझे अपना नाम. ठीक है, इस फॉर्म के अंदर वो रिस्पॉन्स भरेगा. क्या क्या भरेगा? अपना नाम भरेगा, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भरेगा, और अपडेट टाइप वो कौन सा चाहता है वो यहाँ पे भर देगा. और उसके बाद जैसे ही वो सबमिट करेगा मेरे पास उसका ये डेटा इस शीट के अंदर आ जाएगा. इस शीट को मैंने कनेक्ट कर रखा है दो और शीट से. इस शीट को मैंने कनेक्ट कर रखा है
दो और शीट से। एक मैंने वर्कफ्लो शीट बनाई है जिसके अंदर मेरे को स्टेटस शो होता है कंप्लीटेड है या नहीं कंप्लीटेड है, पर इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ट्रिगर का इशू हो गया। प्लस ये 2025 के लिए ही मैंने डिजाइन किया था कि ये 2025 की अपडेट्स भेज दे, बस इसका काम खत्म हो जाए। लेकिन देन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज नॉट हाउ इट हैज टू वर्क। सो आई revisited it and I revised my system, and I'll show you how beautifully now it works. Okay, I'll first show you my form. I will send it to you. You can fill it and then you can tell me later on. Yeah, auto deadline reminder version 2. So I am sending you this link. You can fill the link. Sir, I cannot help if problem is showing. I don't know why it is showing. Okay. And here are the two responses it shows that I have created. And this is the sheet. Now here this time I did one thing. I changed the logic entirely. मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया. I'll show you my chat with ChatGPT what all I did. Email deadline version 2. Now see, we'll have to learn a bit of prompt engineering also in this process. So hello, how it's going? I'm good. I want to make an automated email delivery system using Google App Scripts and Google Forms. So you have to be very clear with the tool that you want to use. Okay. First is this thing. Okay. Getting my point? I think now it is not coming. Okay. So it gave me some workflow. This it has given me, added a Google script. Then I stopped it. I said, wait, let me define my requirements step by step. That is what I am telling you. For any task you want to automate, you have to go step by step. You have to go step by step. I think now it should get solved. Okay. Yes, good. So I told him first I have a Google form that asks for name, email, and type of update the user wants to get on his or her email. It can be either income tax or GST. Okay. Then I stopped. In the Google Sheets, I have the following sheets. One is responses sheet from the form, one more sheet having deadline dates in a year for GST, along with description, and one another sheet having the deadline dates in a year for income tax along with description. Now I want that once the user fills the form, he or she should get the requested updates in the form of an automated email with the subject due date alert and the description of the deadline date. Now you can create a seamless flow using app script code. This is where we have to work. To do this, how triggers will be added, this is will, and how it will be monitored that mails are sent or not. Also, as these dates are same but the year will change every year. Now this is very very important. This makes it a year to year loop, will change every year. The system should not get redundant and should be workable year after year. Now it will tell me that what all I have to do. Solution. First we have to make a Google form. उसमें ये सारा डिटेल होना चाहिए that we have already made. फिर ऐप स्क्रिप्ट इसने मेरे को दिया, ये ऐप स्क्रिप्ट दिया, ठीक है. And how the system works: on form submit stores the user data in the mailing list, runs every 8 a.m., checks if today's matches are any due date. ये आप टाइम इसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है. मैं अभी आपको बताऊंगा ऐप स्क्रिप्ट किस तरीके से काम करता है और उसमें ट्रिगर किस तरीके से ऐड करते हैं. The script automatically picks up the current year. Deadline months and days remain unchanged. Only the year updates dynamically. Okay. Only the year updates dynamically. Then
ओपन ऐप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन, ये सब हमारे को स्टेप्स बता रहा है, ठीक है। देन मैंने यहां पे क्या किया, सैंपल डेटा दे दूं क्या मैं आपको, ये बोल रहा है मेरे। It seems great. I have one question that in the deadline sheet for GST and IT, should I enter the dates with year as 2025 as it will work for 2026 as you said, and the script picks up the year automatically? ओके, इसने कहा कि नहीं, आपको जो डेडलाइन शीट बनानी है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, मंथ, डे और डिस्क्रिप्शन। अब ये भी मुझे निकलवानी थी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जीएसटी फाइलिंग डेट्स एक और चैट खोली, और इससे मैंने डेट सारी निकलवा ली इस डिस्क्रिप्शन में और इस फॉर्मेट में, और इसने मेरे को एक्सेल में बना के दे दी। मैंने सीधा उसको उठा करके यहाँ पे चिपका दिया। आशीष गोयनका जी, आपके पास कोई अभी मेल आया है क्या? लेट्स चेक, ठीक है, क्योंकि अगर आया है तो मेरे मेल से ही गया होगा, और अगर मेरे मेल से गया है तो मेरे पास सेंट मेल में आ जाएगा। मुझे सबकी स्क्रीन को देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, नहीं गया इसका मतलब, अच्छा आपके पास आ गया है, बट आई थिंक वो गूगल वाला मेल आया होगा ना, जो गूगल से मेल आता है कि आपने जो डेटा दिया है। ओके ओके, नो वरीज, ठीक है। ये इस तरीके का मेल जाता है आपके पास, ठीक है। मैं आपको ऐप स्क्रिप्ट दिखाता हूँ किस तरीके से काम करती है। आई शेयर यू द कोड ऑल्सो, नो वरीज, ठीक है। फिर मैंने जीएसटी की डेट्स इससे बनवाई, ऐसे ही मैंने इनकम टैक्स की डेट्स बनवाई। तो अब आप शीट्स देखिए ध्यान से, आयुषी जी ने भी भर दिया है, उनके पास भी चला गया होगा, इन्होंने इनकम टैक्स का भरा है। अब हम देख सकते हैं कि इनकम टैक्स की जो अगली डेडलाइन की डेट है वो कब है। इनकम टैक्स की जो अगली डेडलाइन की डेट है सर, वो यहां से हमारे को दिखती है कि मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, और 15 तारीख तो जा चुकी, फरवरी फरवरी चल रहा है, दूसरा मंथ, 15 तारीख जा चुकी, 28 तारीख को आएगी फिलिंग ऑफ फॉर्म 3CEAD, ओके, फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो तब ये आपके पास अपडेट यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आज की कोई डेट है क्या? आज 21 तारीख है, 21 तारीख को फरवरी में कोई डेट नहीं है, कल की है। तो सर कल आपके पास ये डेट आ जाएगी, नहीं आए तो मैं आपको नंबर देके जाऊंगा, मुझे बताना कि सर आपकी स्क्रिप्ट जो है खराब है, बकवास है, काम नहीं करती, लेकिन करती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद भी बना सकते हैं किसी भी चीज के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम। अब मैं आपको कोड दिखाता हूं। एक्सटेंशंस में हम जाते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फॉर्म बनाया, हमने उसके अंदर, फॉर्म के अंदर जो डेटा कलेक्ट होता है वो एक गूगल शीट में पुल होता है, वो डेटा इस तरीके से दिखाई देता है। अब यहाँ पे आपको चीजों का ध्यान क्या रखना है, जैसे ये रिस्पॉन्सेज है तो इस शीट का नाम रिस्पॉन्सेज ही होना चाहिए हमारी ऐप स्क्रिप्ट के अंदर जो हम लिखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जनरली लिखा रहता है फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1, ठीक है। तो आप इसको यहाँ रिस्पॉन्सेज कर देंगे मैनुअली। फिर जीएसटी डेडलाइंस मैंने बनाई, और उसका किस तरीके से बनाई, जैसा मेरे को जीपीटी ने बताया। मेरे को जीपीटी ने कैसा बताया था, मेरे को जीपीटी ने कहा कि भैया भैया आप इसको 3 कॉलम में एक टेबल में बनाइए, मंथ लिखिए, डे लिखिए और डिस्क्रिप्शन लिखिए। ईयर हम अपने आप सिस्टम की डेट से पकड़ लेंगे, जो भी चल रहा होगा ईयर। अभी 2025 चल रहा है तो हम 10 तारीख, पहले महीने की 10 तारीख उस पर ये अपडेट भेज देंगे, पहले महीने की 11 तारीख उस पर ये अपडेट भेज देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने मेरे को बताया कि आपको एक काम करना है कि आपको जो डेट वेट लिखनी है अपडेट वाली, मैंने कहा कि भैया मैं ईयर भी लिखूं क्या? तो इसने मेरे को समझाया कि भाई तुम डेट गलत फॉर्मेट में लिख रहे हो, मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो डेट को किस तरीके से पढ़ती है, वो डेट को इस तरीके से पढ़ती है। पहले कॉलम में आप लिखेंगे क्या, वो भी इसने मेरे को बताया, और उसी फॉर्मेट के अंदर मैंने डेट्स बनाई, ठीक है। देखिए इसने बताया मेरे को, देखो भाई रिस्पॉन्स ऐसे आएगा, इसने देखो कितना अच्छा बना के दिया मेरे को। उसके बाद आपकी जीएसटी डेडलाइन की डेट इस तरीके से है, ठीक है, एक इटरेटेड डेटा दे दिया इसने मेरे को, कोई एग्जाम्पल वाला। इनकम टैक्स डेडलाइन की डेट इस तरीके से है, ईमेल लॉग आपका इस तरीके से है। और मैंने इसको बोला कि भैया भैया एक हमारा ईमेल लॉग भी बना दो, कि भाई पता तो चलना चाहिए ना कि किसके पास कौन सा गया है ईमेल। तो इसने ईमेल लॉग बना दिया कि इनके पास अभी गया है, जब आपके पास जाएगा तो आपका नाम भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, मैंने एक भी फॉर्मूला कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा, स्क्रिप्ट लिखा है केवल। अब वो स्क्रिप्ट क्या लिखा है वो भी इससे ही लिखवाया है, चैट जीपीटी से, मुझे तो कोडिंग आती नहीं है, राइट। तो वो मैंने लिखवाया और उसको मैंने डिप्लॉय किया
विथ दिस। तो ये वर्जन 2 में हम जाते हैं एक्सटेंशंस में। एक्सटेंशंस में हम जाते हैं ऐप स्क्रिप्ट में। ठीक है। ऐप स्क्रिप्ट में जब आप खोलेंगे तो कोड जीएस करके यहाँ पे आता रहता है। ठीक है। ऐसा हो सकता है, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ठीक है। आई कैन नॉट हेल्प इफ इट इज कमिंग, आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग। एक मिनट। अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या? प्लीज बताइए ना प्लीज। अभी भी आ रहा है यार, क्या करूं मैं बताओ। आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग। जूम की ट्रिप है। ओके। पता नहीं मुझे क्यों आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग, आई डोंट नो, आई एम सॉरी, आई मीन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन। I'll share you the script, no worries. Okay, I'll share you this. तो यहाँ पे इसने स्क्रिप्ट लिख के दे दी। देखिए पहले क्या करता है ये स्क्रिप्ट में। अब मैं इतने टाइम से स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा हूं ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्ट पढ़ने आ गया। ओके। मैं एक बार आउट होके वापस इन होता हूँ, ठीक है, ऐसा कर लेता हूँ। लीव। नाउ इज इट ओके? प्लीज लेट मी नो, इज इट ओके? मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जूम को टैब पे मिनिमाइज कर दो, ठीक है, ओके, मिनिमाइज कर दिया। और जूम इज मिनिमाइज्ड ओनली। नाउ गुड सर, ओके। ठीक है। चलो जी, बढ़िया है, हो गया तो। टेंशन हो गया था मुझे, क्या हो रहा था। बेटर। ओके। चलिए। क्या है, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है, देखिए मैं आपको कह रहा था कि आपको ना इनके नाम जो हैं शीट्स के, ये जो नीचे शीट्स दी हुई हैं जो हमने शीट्स बना रखी हैं, इनके नाम बहुत ही समझदारी से रखने हैं। कई बार गलती क्या हो सकती है और आपका कोड गलत क्यों हो सकता है। आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए रीनेम करने गए, फॉर्म्स 1 लिखा होता है, आपने स्पेस दबा करके और इसको सेव कर लिया, तो आपका स्क्रिप्ट चलना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने स्पेस नहीं दबाया, तो स्पेस का भी गड़बड़ हो जाता है ना, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको लग सकता है कि आपका स्क्रिप्ट क्यों नहीं चल रहा है, तो आपने नाम प्रॉपर लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, ये आप पहले खुद फिक्सेस कर लीजिए। हर बार चैट जीपीटी के पास जाने, अपनी प्रॉब्लम को लेकर के जाने से अच्छा है कि हम पहले फिक्स को देखें कि यार नाम की वजह से आ रहा है क्या। क्योंकि जो भी एरर देता है वो, जो भी वो एरर देता है, वो हमें पता लगता है, नीचे लिखा हुआ आता है कि इस लाइन के अंदर कोड में एरर है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये शीट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसने रिस्पॉन्स कर लिया, जीएसटी डेडलाइन को, गेट डेटा कर लिया, इनकम टैक्स डेडलाइन को कर लिया, और ईमेल लॉग का एक शीट इसने यहाँ पे बना दिया। ठीक है। सेंड टाइम स्टैम्प इसने यहाँ पे लिख दिया कि भाई सेंड जब भी होगा हम उसका टाइम स्टैम्प देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसने जो है नीचे अगर हम आते हैं तो डियर, और यहाँ पे नेम, इसने यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करे, नाम कौन सा है, नाम कहाँ से उठा रहा है। ये नेम उठा रहा है यूजर का इस वाली जगह से, ईमेल उठा रहा है यूजर का इस वाली जगह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये देखिए, ये
ये देखो डिफाइन कर रहा है अलग अलग। अब डेट टाइप कौन सी है, जीएसटी है, वन कौन सी है, ठीक है, तो यहाँ से उठा रहा है। फिर उसके बाद उसके हिसाब से इसने नीचे और कोड लिखा, और यहाँ पे इसने मेल का कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ये मेल का कंटेंट इसने लिखा, ये एंटर वेंटर दबाता है ना, तो उसका ये कोड होता है, देखो अगर आप ये देखोगे ना, ठीक है, इस तरीके से पी लिख करके, और ये जो बनाते हैं ये एंटर का कोड होता है कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए हमारा डेटा। ठीक है, यहाँ पे ये जो डॉलर साइन के साथ और ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो इसने डिफाइन किए हैं। ड्यू डेट कौन सी कहाँ से पकड़नी है, नाम कहाँ से करने हैं, तो ये नेम पैरामीटर इसने यहाँ पे डिफाइन किया, फिर उसको यहाँ पे खींच के ले आया और इसको नाम लगाया आपका। ठीक है, ये सब चीजें करी। फिर यहाँ पे ट्रिगर्स में हम जाते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता रहा था एडिटर में, यहाँ पे जब आप ये स्क्रिप्ट बनाते हो ना, ठीक है, तो इसको पहले यहाँ पे सेव करना पड़ता है। अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो यहाँ पे सेव करेंगे, और यहाँ से एक रन जो बटन है इसको प्रेस करेंगे। जब हम रन करते हैं तो ये एग्जीक्यूशन स्टार्टेड इस तरीके से दिखाता है, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड दिखाता है। ठीक है ना, अभी तो यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं क्योंकि हमारी डेट्स ही नहीं है। ठीक है, लेट मी शो यू। कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, देखो हुआ क्या, नहीं हुआ ना। ये तो 2/15 का है, जो पहले मैंने जब स्टार्ट किया था इसको बनाना, तब टेस्टिंग किया था, तब ये उसका है। ठीक है, तो ये उसका है। अभी उसने एग्जीक्यूशन कुछ नहीं किया क्योंकि कोई डेट ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये स्क्रिप्ट बना ली। अब आप ध्यान रखिए एक बात का, कि जब भी हमने कोई फ्लो बनाया है, वर्क फ्लो बनाया है ऑटोमेशन का, हमारे को उसमें दिमाग में रखना है ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ट्रिगर पॉइंट्स। कि मान लो इसमें मैं एक और चीज इंटीग्रेट कर सकता था। क्या इंटीग्रेट कर सकता था? जैसे ही यूजर, यानी आप लोग जैसे ही फॉर्म भरते हो, आपके पास एक मेल चला जाए, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस, वी विल बी एडिंग यू अपडेट्स। क्या मैं ये स्टेप में डाल सकता था? हाँ मैं डाल सकता था, पर मैंने नहीं डाला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना कोई ऑटोमेशन सिस्टम बनाएं, तो जैसे ही यूजर ने फॉर्म सबमिट किया, अब ध्यान से मेरी भाषा को सुनना, क्योंकि इसी के अंदर सारा सार छुपा है कि हमारे को करना क्या है, फ्लो कैसे बनेगा। सबमिट किया, यानी पहला ट्रिगर पॉइंट क्या है? फॉर्म सबमिट। पहला ट्रिगर पॉइंट क्या है? फॉर्म सबमिट। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहां डीबग के ऊपर यहां पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट अलर्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सेंड ड्यू डेट अलर्ट्स। अभी हमारी स्क्रिप्ट कहां से चल रही है? सेंड ड्यू डेट अलर्ट से चल रही है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट यहाँ पे रन होती है। नीचे नीचे जाते जाएंगे तो आपको और दूसरी चीज दिखेगी, और नीचे जाएंगे तो आपको और नीचे दूसरी चीज दिखेगी। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स होते हैं। ईमेल अलर्ट सेंट, ऑलरेडी सेंट, ये देखो ये आ गया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ये ईमेल ऑलरेडी सेंट का फंक्शन है। ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। यहाँ से देखो सेंड ईमेल का फंक्शन नीचे आएगा, देखो यहाँ पे सेंड ईमेल, ये फंक्शन है सेंड ईमेल का, ये यहाँ पे आ रहा है देखो। ठीक है, ठीक है, फिर सेम डे का फंक्शन है, डेट मंथ मतलब ईयर को पुल करने के लिए, और वो सब चीजें। तो ये कुछ तरीके से लॉजिक रन करके इसके इसने स्क्रिप्ट बनाया है। ट्रिगर्स क्या होते हैं? अगर मैं एक ऐसा ट्रिगर बना देता कि जैसे ही यूजर जो है वो फॉर्म डेटा एंटर करे, ठीक है, और उसके पास एक मेल चला जाए, तो उसका ट्रिगर क्या होता? ऑन फॉर्म सबमिट। क्या होता? ऑन फॉर्म सबमिट। इस केस में ट्रिगर जो है वो टाइम बेस्ड ट्रिगर होगा। क्या होगा? टाइम बेस्ड ट्रिगर। मान लीजिए मैंने इसमें ट्रिगर लगा रखा है रात को 12 से 1 बजे के बीच में, ये शीट का अपने आप ऑटोमेटेड प्रोसेस रन करेगा, और देखेगा कि क्या उस दिन जितने लोगों ने रजिस्टर किया है उसके हिसाब से उनके पास मेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब ट्रिगर्स की बात करते हैं। मैंने इसमें एक ही ट्रिगर लगा रखा है। मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म और दिखाऊंगा जो मैं अपने वेबिनार को मैं अपने वर्कशॉप के लिए यूज करता हूं। उसमें मैंने 2-3 ट्रिगर लगा रखे हैं। ठीक है, यहां से आप ऐड ट्रिगर कर सकते हैं। मैं आपको ऐड ट्रिगर करके दिखा रहा हूं। सेंड ड्यू डेट अलर्ट्स किया हमने। ठीक है, मेरा जो ट्रिगर है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। सेंड ड्यू डेट अलर्ट्स किया, रन्स ऑन हेड। ठीक है, इट इज अ टाइम ड्रिवन ट्रिगर। ट्रिगर, ठीक है, इट इज अ टाइम ड्रिवन ट्रिगर। अगर ये फॉर्म सबमिट वाला होता तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट से भी हो जाता। ठीक है ना। सेलेक्ट टाइम, ये कब जाना चाहिए? स्पेसिफिक टाइम, डे टाइमर है, मिडनाइट टू 1 AM। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर रखा है। और अगर कोई फेलियर होता है तो मुझे ये नोटिफाई भी करती है गूगल कि आपकी स्क्रिप्ट ना ठीक से चली नहीं है। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, आपको इसको सेव करना है। यहाँ पे देखिए एरर रेट लिखा हुआ आ रहा है 0%, यानी ये परफेक्टली फाइन काम करा है अभी तक। ठीक है, अब ये कल आप मेरे को बताना, वैसे चल जाएगा कि ये काम करा है या नहीं करा, आपके पास मेल आ जाएगा। ठीक है ना, चल जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिगर बनता है। मैं आपको ये ऐप स्क्रिप्ट शेयर कर देता हूं, अगर आप चाहते हैं तो आप भी अपने लिए ये बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। पहला स्टेप आपका रहेगा, यू विल हैव टू क्रिएट अ डेडलाइन रिमाइंडर फॉर्म। ठीक है, एक मिनट, वर्जन 2 चलाना है ना हमें, वर्जन 2 यही वाला है, वर्जन 2। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं वर्जन 2, ताकि समझ में आए मुझे भी कि वर्जन 2 है। ठीक है, चलिए, 5 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इस तरीके का फॉर्म बनाना जिसमें आप यूजर से एंट्री ले रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या है, उस डेटा के शीट में जाना और यहाँ पे देखना कि भाई रिस्पॉन्सेज प्रॉपरली कलेक्ट हो रहे हैं। हाँ सर, रिस्पॉन्सेज प्रॉपरली कलेक्ट हो रहे हैं। हमारे को वर्क फ्लो क्रिएट करना है। ठीक है, फिर ये डेट्स निकाली हमने, इन डेट्स को हमने पुश किया, ये डेट्स निकाली, ये डेट्स निकाली, और फिर एक ईमेल लॉग बनाया। इस तरीके की शीट्स बनाई, हमारे को तीनों शीट्स बनानी है। आप इन शीट्स का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिमाग से रख लीजिए, याद करके दिमाग में, कि पहले मंथ है, फिर डे है, फिर डिस्क्रिप्शन है, और हमारे को कोड ऐसा लिखवाना है कि वो ईयर टू ईयर रन करे, हमारे को अपडेट नहीं करना पड़े उसे। ठीक है, अच्छा, ये आपकी डेडलाइन शीट 2 हो गई इनकम टैक्स की, और ये ईमेल लॉग एक हमने बना लिया कि जब भी ईमेल जाएगा तो आपके पास ये लॉग मेंटेन हो जाएगा अपने आप। ठीक है ना, जिस टाइम पे जाएगा विद टाइम और विद डेट आपके पास लॉग मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका सिस्टम बन गया सर। मैं आपको इसकी स्क्रिप्ट दे देता हूं। अब आपको स्क्रिप्ट दे रहा हूं, तो आप इसमें एक काम करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख रखा है, बाय सीए आशीष सचदेव, तो ये हटा दूं क्या। ठीक है, ये चलने दो। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप नाम भी लिख सकते हो अपना, कुछ भी कर सकते हो, तो जिसके पास मेल जाएगा वो आपको अप्रोच कर ले। आ ही नहीं रहा यार, ये बहुत ज्यादा वर्ड हो गए। रुको, एक काम करते हैं, नोट पैड। एक सेकंड में आपके साथ वो फाइल शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड, कैन आई ऐड फाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप। ओके, सो यू कैन, ऑल्टरनेटिवली, हाँ जी बताइए। ये बोला था आशीष, ऑल्टरनेटिवली एक बार मेरे को शेयर कर दो सो दैट आई कैन सेंड मी पीपल ऑन ईमेल आल्सो इफ रिक्वायर्ड। आई सेंड, वील टेक इट फ्रॉम यू, डेफिनेटली नो वरीज। आई सेंड। अच्छा, एक चीज जो मेरे को आपको बतानी थी सर, अब ये बना तो लिया हमने, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 500 लोग हैं जिन्होंने ये फॉर्म भर दिया, ठीक है, गलती से, और गलती से क्या मतलब, अच्छी बात है भर दिया तो, अब होगा क्या कि मेरा है ना ईमेल ब्लॉक हो जाएगा। तो इसको कैसे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि आप इसको अपने जोहो बुक्स पे या किसी जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं जहां पे आप एप स्क्रिप्ट या गूगल शीट्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, वहां पे इसको पुश कर दो, सेम चीज को, तो आपका वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि आपका जो है बिजनेस अकाउंट वहां पे मिल जाएगा, या फिर अगर आप गूगल वर्कस्पेस यूज करते हो तो उसमें भी आपका ये चल जाएगा, उसमें भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप इस तरीके के ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज बनाएं, एक चीज का ध्यान और रखें, मैं आपको बता रहा हूं कि कहां कहां पे एरिया ऑफ ग्रे एरियाज हैं। ये नहीं कि ये पूरी स्क्रिप्ट एकदम परफेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। मैं आपकी आपको बताऊंगा 2-3 चीजें और, एक दो फॉर्म्स और बताऊंगा जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं, और मुझे पता लगा कि यहाँ पे यार ये तो बहुत पेन एरिया है। जैसे मान लो अगर मैं ये ईमेल भेज रहा होता, ठीक है, और इस ईमेल के अंदर मैं कोई भी ऐसी फील्ड नहीं डालता जो चेंज नहीं होती हर यूजर के साथ, जैसे यहाँ पे हर यूजर का नाम आ रहा है, ठीक है,
उसकी ईमेल का डिस्क्रिप्शन चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंज हो रहा है। अगर ये सब चीजें चेंज होने वाली, मतलब मेरा ईमेल स्टैटिक है अगर, then after some time what Google will understand that this is a spam kind of a mail, and once it understands it is a spam kind of a mail, Google लोग इतना यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसका स्पैमिंग डिटेक्शन एक नंबर है, ठीक है, और आपके लोग, आपके सारे मेल कहां जाने लग जाएंगे, स्पैम में। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने मेल की बॉडी में कुछ डायनेमिक फीचर्स डालें जिससे कि वो स्पैम में ना जाए, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा जी, अब और क्या क्या हो सकता है, जो चेंजेस हो सकते हैं, जो गड़बड़ियां हो सकती हैं हमारे इसके अंदर, मैंने आपको बता दिया कि अगर ज्यादा लोगों ने शेयर कर लिया तो फिर हमारा ईमेल ब्लॉक हो जाएगा। उसके निपटने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको एंटरप्राइज वर्जन यूज करना है, ठीक है, या फिर आप इसको आप लेके जा सकते हो अपने दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जो आपके मेल बॉक्स को भी इंटीग्रेट करता है, और उसके अंदर आप इसको वहां वहां से इंटीग्रेट कर लो, तो आपका ये चल जाएगा ऐप स्क्रिप्ट, वहां पे भी कोड वोड वहां पे भी रन हो जाएगा। सर हमको चलाना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, ठीक है, अगर मेरे को चलाना होगा तो मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी बोलूंगा कि भैया ये उठा करके यहाँ ले जाओ और यहाँ से भर दो, ठीक है। चलिए, अब इस तरीके के सीमलेस फ्लोज हम बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे आज ही मैं सुबह सुबह, ठीक है, जब सुमित भाई का कॉल आया तो मैंने आज सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ कुछ नई चीज और शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैंने खोला सीए जीपीटी, क्या खोला मैंने, सीए जीपीटी, कौन सा वाला है ये देखिए आप, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस वाला, ठीक है। और फिर मैंने इससे कहा कि भैया भैया, हेलो, can you give me list of applicability of different compliances as per the Companies Act 2013 for a company based on its class। मैं एक ऐसा लिस्ट मांग रहा हूं इससे जिसमें ये सारी कंप्लाइंस दे दे, ठीक है, बेस्ड ऑन अ क्लास ऑफ कंपनी। क्लास ऑफ कंपनी मतलब वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक के अंदर लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें। गिव इट इन अ टैबुलेटेड, अब ये देने लग गया ऐसे, तो मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मैंने कहा रुक जा भाई, स्टॉप किया मैंने। गिव इट इन अ टैबुलेटेड फॉर्मेट एंड ऑल्सो इंक्लूड एप्लीकेबिलिटी ऑफ चेकलिस्ट designed to assist professionals in evaluating the applicability of IFC, CARO, cash flow, Ind AS, internal audit and more, ठीक है। अपन को ना, अपन को नहीं पता कि भाई क्या क्या हो सकता है, और कोई चीज अपन मिस कर दें तो ये सब देगा। इसने देखो बोर्ड मीटिंग्स का दिया, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, इसके लिए इतनी होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एओसी 481, ये सब इसने लिस्ट बना करके दे दिया। चलो जी, मैंने कहा काइंडली चेक दिस अबव रिस्पॉन्स एंड मेक इट अपडेटेड टिल 31 दिसंबर 2024। तो मैंने इसको कहा कि मेरे को चेक करके बता दो, इसने यहाँ पे कुछ एरर देने लग गया। तो मैंने सॉल्व द एरर किया, तो हुआ नहीं सॉल्व द एरर बहुत बार, तो फिर मैंने आगे बढ़ गया और मैंने इसको कहा नाउ आई वांट टू क्रिएट एन एप्लीकेबिलिटी चेकलिस्ट using Google Workspaces where a user enters the relevant details about any company and he is shown a result of a tabulated checklist with indications that what all is applicable to the company and what is not applicable. There should be a button so that user can print out the results based on the data entered and a button to reset the forms filled. There should be a button of send email which sends the mail to the client with the results of applicable compliances। अब यहाँ पे ना मेरे दिमाग में क्लैरिटी कम थी, जैसे जैसे मैं इस पे काम करता गया थ्रू आउट द डे, तो मेरे को समझ में आया यार ये बटन बटन मैं उसको क्यों दे रहा हूँ। मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया, मैं आपके साथ वो फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, अभी तक कोई रिस्पॉन्सेज नहीं है, मैंने आज ही बनाया है ये फॉर्म, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको टेस्ट करें और देखें कि कौन सा ईमेल आपके पास आता है। कोई भी डेटा आप इसमें डाल देना और फिर हम देखेंगे कि ये कितना बढ़िया काम कर रहा है। ये मैंने आज ही बनाया है, इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप भी टेस्ट करो, हम भी टेस्ट करते हैं, मजा आएगा। चलिए, इसमें देखिए फॉर्म के अंदर क्या है, ये इस तरीके से सेक्शन वाइज फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें सेक्शन ये है, ईमेल डालना है फर्स्ट आपको, मैं आपको प्रीव्यू में दिखा रहा हूँ, मैं तो उसमें दिखा देता हूँ। प्लीज समबडी हेल्प मी टू फिल इट, ओके। मैंने देखो इसने मेरे को बताया भी कि भाई आप है ना इसको फिल कर लो फॉर्म को विद सम सैम्पल डेटा इट हैज गिवन मी। आई कैन शेयर द सैम्पल डेटा आल्सो विद यू पीपल, तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भरना, ठीक है। मेरे को तो एक्सेल का फॉर्मूला भी नहीं आता, वो भी मैं इससे लिखवा रहा हूँ, देखो सब कुछ इससे चल रही है बातचीत, ठीक है। ये देखो ये इसने सैम्पल डेटा दिया, टक 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 टक, एक सेकंड,
कॉलम नेम ये है और हमारा डिटेल ये है। विल सी कि किसी का रिस्पॉन्स आता है। हाँ, तो मैंने फर्स्ट सेक्शन बनाया जिसमें वो ईमेल डालेगा। सेकंड सेक्शन में आएगा बेसिक कंपनी इंफॉर्मेशन, जिसमें कंपनी का नाम, इनकॉर्पोरेशन की डेट, उसके बाद कंपनी का क्लासिफिकेशन कौन सा है, टाइप ऑफ कंपनी कौन सा है, ये डाल देगा। ये नेक्स्ट सेक्शन पे आ गया। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डालेगा, पेड अप कैपिटल कितनी है, टर्नओवर प्रीवियस ईयर का कितना है, अगर नहीं है तो जीरो डाल देंगे। ठीक है। टर्नओवर 2 years बिफोर प्रीवियस ईयर कितना है, टर्नओवर फॉर द 3 बिफोर प्रीवियस ईयर कितना है वो डाल दो, बोरोइंग्स डाल दो। डज द कंपनी है बोरोइंग, यस और नो कर दिया। टोटल बोरोइंग डाल दो, अगर जीरो डाल दो अगर कोई बोरोइंग नहीं है तो। नेट प्रॉफिट इंफॉर्मेशन एंड अदर, नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का कितना है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। एंड डज द कंपनी एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, यस और नो कर दिया। डज द कंपनी है फॉरेन ब्रांचेस, यस और नो कर दिया। इज द कंपनी लिस्टेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, यस और नो कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक ऑथेंटिकेशन भी मांगा लास्ट में यूजर से, कि आजकल भाई एक्ट वैक्ट बहुत लगते रहते हैं, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू बता दे, एक तो तेरा नाम बता दे, तेरा मोबाइल नंबर बता दे, और तू ये भी बता दे मुझे, इसको मैंने वो नहीं कर रखा, ये कर दिया इसको, चलो ठीक है ना। और ये भी बता दें कि आई एम प्रोवाइडिंग द डेटा एज पर माई फ्री विल एंड अलाउइंग द यूज। मैं इसको ठीक से कर नहीं पाया है प्रॉपरली, बट ये हो गया। ठीक है ना, तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे। और अगर आई अग्री कर देगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आई डिसअग्री कर देगा तो इसको सीधा सेक्शन 1 पे फेंक देगा वापस। ठीक है ना, तो एक जन ने भर दिया है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लेट मी सी इफ सम ईमेल हैज बीन सेंट। आया क्या सर ईमेल? ईमेल आया क्या सर आपके पास? नहीं आया? सर ईमेल आया क्या आपके पास गोयनका जी? नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, अभी तो रन ही कर रहे हैं हम लोग स्क्रिप्ट, ये लो। अभी मैंने ट्रिगर ऐड नहीं किया है। ये डेटा भी नहीं आया इसमें, तो कैप्चर ही नहीं किया डेटा इसने, इसमें कर लिया क्या नहीं किया यार, इसने इसने कर लिया कैप्चर, इसमें आ गया डेटा। इसने पुल नहीं किया ना, मैंने इसमें डाल रखा है सारा, ये डेटा एडिट नहीं हो रहा इसका। वेट वेट वेट, आई विल डू वन थिंग। नहीं आया ना मेल। डेटा पे गए, प्रोटेक्ट इसको हटा देते हैं, प्रोटेक्शन को यार। सो यू वांट टू रिमूव दिस, प्रोटेक्ट रिमूव। एक जन और भरिए ना प्लीज। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन इज परफेक्टली फाइन। ठीक है। आशीष, हाँ जी। sorry to disturb, but I think now let's conclude because probably it's usually an hour session. अब थोड़ा audience डिप होने लग जाएंगे ओके and ओके, तो I आप एक understand. काम कर सकते हैं, मैं आपको वर्कफ्लोज मैंने समझा दिया, मैं थोड़ा सा और चीज एक बताना चाह रहा था, वो बता देता हूँ गिटहब पे। We have got only one response, but you can use it. I'll make it that you get the responses based on the company data that you have filled in. Okay. So what kind of workflows you can create? You have got a fair enough idea, and this has given me अभी इसमें मैं पीडीएफ वाला भी बना रहा हूँ कि आपके पास पीडीएफ आ जाए रिस्पॉन्स। I'll share the chat with you so that you can also tweak with the chat. Is not yet supported। अच्छा, ये CAGPT में चल रहा है ना, इसलिए शायद ये सपोर्ट नहीं करेगा। I'll share my chat वो वाला। एनी क्वेश्चंस एनीबडी? हाँ, एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला था। कई बार आपने देखा होगा हम कोई ऐसा HTML कोड बनाते हैं जिसके अंदर हमारे को यूजर का नंबर लेना होता है, मोबाइल नंबर। राइट। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ जहां पे गड़बड़ियां हो सकती हैं। ठीक है। यूजर का मोबाइल नंबर लेना होता है।
और यूजर अपना मोबाइल नंबर डालता है, उसके अंदर एक स्क्रिप्ट रन करवा सकते हैं हम लोग लिख करके जीपीटी को, जहां पे वो यूजर जिस कंट्री में है उस कंट्री का झंडा वहां पे आ जाए। तो एक वेबसाइट है आईपी करके, IPIO, ठीक है ना, उसमें जाकर के आपको उसमें एंटर करना पड़ेगा, अपना लॉगिन करना पड़ेगा, और वहां से अपना कोड जो है वो लेकर के आपको स्क्रिप्ट में पेस्ट करना पड़ता है। चैट जीपीटी विल गाइड यू ऑन दैट ऑल्सो। ओके, तो वो आप कर सकते हैं ताकि आप एक और इंटरेक्टिव और थोड़ा अच्छा दिखने वाला, प्रोफेशनल दिखने वाला फॉर्म वहां पे क्रिएट कर सकें। ठीक है, मैंने बहुत सारे फॉर्म्स और ये क्रिएट किए हैं। वी कैन गेट इन टच एंड वी कैन वर्क on these types of automation together also. I am ready to take any questions on app script related issues or something that you want to ask. I have already shared the script of that thing. So I think it's time to wrap up now. I'll be working on this checklist वाला चीज। अभी ये एक और रिप्लाई आया है मेरे पास, लेट मी चेक वेदर इट, अरे यार ये इसमें पुल नहीं कर रहा है ना डेटा, इट्स नॉट पुलिंग द डेटा इन दिस, एंड इफ इट इज नॉट पुलिंग द डेटा इन दिस, इट इज नॉट रनिंग माई स्क्रिप्ट। दैट इज द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग। ओके, देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट में आए हम लोग, और मैं जब इसको रन करता हूँ, नो ईमेल एड्रेस फाउंड ऑन रो 998, तो ये ईमेल में नहीं आ रहा ना यहाँ पे, इसलिए ये उसको भेज ही नहीं रहा है कुछ, क्योंकि एडिटिंग को ऑफ कर रखा था मैंने इसके अंदर, गड़बड़ हो गया मेरे से। So I'll share the code with all the codes that we have talked about today. एक compliance वाला भी with Sumit sir, and he will probably help you in doing that. Okay. So that was all for the day. Thank you so much. I was in a hustle. I was working on some projects and I was doing a lot of things. I'm sorry for that. I got late also. And this is my LinkedIn. We all can connect. I would be happy to exchange knowledge relating to AI and all the other things relating to automation and stuff. That's it for the day. I will now ask Sumit sir to please take over. Thank you, Ashish, for the wonderful session. And first of all, bringing the logic or concept of app script. And the best part about, there are two good takeaways. One, कि app script होता है, and दूसरा, we all should appreciate that we should start beta. अगर आशीष ने एक solution था which was not fully complete, but he still had that courage to start beta version and show कि ऐसा हो सकता है, and he left us with a food for thought. I'll quickly ask Rahul to summarize the session, and then we have Neeraj Bhaiya waiting. He's our vice president to offer a formal vote of thanks to Ashish. Yes, Ashish, please. सर एक बोलो चीज मैं सर. बोल रहा हूँ कि आप अपना मेल आईडी मेरे को भेज देना, ताकि मैं आपको एक बना करके आपको भेज दूं, ताकि आप अपने ग्रुप में शेयर कर सको जो भी चीज हमने आज किया है उसको लिख करके समराइज करके। जरूर जरूर जरूर. Even एंड द Ashish, फाइल्स this is just a ऑल्सो। beginning of our relationship. Probably we'll have more sessions from you. I appreciate that. And you being a good friend, I don't need to even ask you. So उतना हक अपने को बनता है, आपको अभी भी बुला सकते हैं. Because Back I to will you, tell you Rahul. a fun, I will tell you a small story. The day I went to Hyderabad, he was the first person I met. He and Animesh Bhai was there. And that day I was carrying a lot of ghevar from my city, Pink City. And he's my boss. I call him boss. Okay. तो मैंने बोला रात को कि बॉस आज अपन घेवर खा के ही सोएंगे, एंड वी हैड दैट स्वीट टुगेदर, सो दैट वाज Thank you so much, देयर। Ashish. थैंक यू सो मच। आई विल शेयर माय ईमेल आल्सो, इट इज this। Yes, yes, please continue आप लोग। Thank you so much, Ashish, for the wonderful as well as insightful session. I'm very sure that the participants must have been benefited a lot out of it. So thank you, Ashish, once again. And I kindly request CA Neeraj Agarwal Bhaiya, our chairman for the session, to kindly offer a formal vote of thanks. And vice president of the association as well. And vice president of the association. Thank you, Sumit. Thank you, Rahul. First of all, Ashish, thanks a lot for a wonderful session. And I'm sure all our participants who participated in today's session would have immensely benefited from all the deliberations and the new concepts which you have brought in today and shared with all the participants. And I'm sure this is just the beginning, and we would continue to have a lot of such sessions from your end.
from the Pink City, and Jaipur is a place which is loved by all. And Ashish being no exception, we truly look forward to more such sessions from you, because AI is a vast subject, and especially for professionals like us who are from the commerce background. So, Sumit, do ensure that we have more sessions from Ashish in the near future. So, thanks a lot, Ashish, for taking time out. And for the benefit of our participants, just to remind you all, on 8th of March, Saturday, we are having the 17th annual conference of our association at Royal Bengal Room City Center 1. I encourage all of you to join us in this annual conference and gain from this conference. Thank you. Back to Rahul and Sumit. And a huge round of appreciation for all our participants who have been there to make this session a wonderful, lively session and a successful session. So this is the fourth week, and we have 4 more weeks at least lined up. So I seek your further, inputs or availability. And thank you all. With this note, I can conclude the session. Rahul, you have something to speak? No, Sumit, it's completely fine. Now we can conclude the session. Resources. They are asking for resources. I'll share it with Sir, Sumit Bhai सबको on email, and I आशीष जी will से सारा definitely. रिसोर्स लेके सबको दिया जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. हाँ, दे देंगे. एंड उसमें क्या आशीष है, जी को हम हम भी अगली सीख बार रहे भी हैं. We are बुलाएंगे. also developing. करेक्ट. तो डोंट वरी अबाउट रिसोर्सेज. वी पहले बार हम स्पीकर को पहले ये पूछते, भैया जो बताओगे वो देना पड़ेगा. So we at Wipcar very, the only focus is that we let's all grow together. So don't worry about the resources. Thank you, Ashish, for sparing your time. Thank you all Thank for you so joining much. the meeting. Thank you so much. Bye bye. I'll end the Thank call you. for all. Thank you. Bye bye. Thank you. Have a great day. Bye.